इफ़ यू आर समवन जिसको मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता और उनको वो टेक्निक बहुत मुश्किल लगती है जहाँ पे आप थ्रेड को अपने हैंड्स के अक्रॉस लेटते हो और एक मैजिक सर्कल बनाते हो, देन आई हैव अ परफेक्ट हैक फॉर यू। ये हैक उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैजिक रिंग मेरे बस की बात नहीं है। सो टू डू दैट हैक यू हैव टू मेक अ स्लिप नॉट। स्लिप नॉट का लेसन ऑलरेडी अपलोडेड है, टू चेक इट आउट इफ इट सीम्स हार्ड टू यू। एंड देन स्लिप नॉट बनाने के बाद नाउ कम्स द मैजिक। यू विल चेन फॉर 1 2 3 and 4 चेन्स बनाने के बाद आई विल ज्वाइन द 4th चेन विद द फर्स्ट चेन दैट आई मेड विद द हेल्प ऑफ अ स्लिप स्टिच। तो मैं इसके अंदर अपना हुक इंसर्ट करूँगी फर्स्ट वाले के अंदर, and then I will yarn over and make a slip stitch right here. As soon as I make a slip stitch you will see कि ये जो मैंने 4 चेन्स को आपस में ज्वाइन किया है यहाँ पे इनके अंदर एक छोटा सा सर्कल बन रहा है, ये वाला बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट सा नज़र आएगा, दिस वन। यही छोटा सा होल जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज योर मैजिक रिंग और मैजिक सर्कल। अब इसके अंदर मैं आपको काम करके दिखाती हूँ। सो आई विल मेक 6 डबल क्रोशेज इनसाइड दिस स्मॉल होल टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपको मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता तो आप किस तरह काम कर सकते हो। सो फर्स्ट डबल क्रोशे, ये वो होल छोटा सा, एंड देन second double crochet, third double crochet, four, five, and 6, and then you can join the 6th double crochet with the first with the help of a slip stitch, and then this is how you get a magic circle hack in the most easiest way। और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे आप मज़ीद काम कर सकते हैं। So let me know if you liked my hack and my techniques, and if you have any questions do let me know and I'll promise I'll help you out.